Hello, good morning, everyone. I'm audible, guys? Yes, sir, you are audible. Yes. We'll start the session in a couple of minutes, huh, guys? And we'll start with your introduction so that I will get to know that what is your background and I can help you accordingly and we'll start the session. Okay, guys? Hello, everyone. Good morning. We'll start the session, guys. Okay. Before starting the session, I need some introduction from you all guys as well. And before your introduction, I would like to give my introduction. So my name is Yasser Qureshi. Currently, I'm working as a data engineer in a company called as 3i Infotech, and my client is Crystal, basically. And I've been in this field for almost 7 years, and into development and data engineering almost 6 years, and for more than 4 to 5 years, I've been teaching in the field of data analytics, and I've possibly trained and what do you say? Place the candidates in their desired designation. The only criteria is that when if you want to get into the field of data analytics, make sure that you study hard from the very first day. That is the only requirement that I need from you guys. So irrespective of the fact that either if you are from IT background or non-IT background, or you had a career gap, anybody can do it. The only criteria that I need is that continuous studying, continuous practice is required to get into the field of data analytics. Okay, so let me just start with the introduction. Okay, let us start with Prashant. Prashant, can you please give your introduction so that I can get to know your background and I can individually help you guys where to start with, what all things that you can inculcate in your profile. Hi, Prashant, or anybody wants to start with the introduction? So it's very important that we know each other. Hi, sir. Sorry, I was on mute. No, no problem. Yeah, Prashant, tell me. Yeah. So, first of all, thanks for giving me opportunity to introduce myself. My name is Prashant Narnavre. Basically, I'm from Nagpur, Maharashtra, and I have completed my degree in Bachelor of Engineering, Mhm. and currently pursuing MBA. Uh, I have total 5 years of experience, and currently I am working as a customer experience specialist at ETEC Gandhinagar, Gujarat. And I'm Nice. currently looking to get a job or a transformation into data analysis. That's it about me. Oh, so you want to transition yourself into the field of data analytics. Okay. Yes, yes, Are you yeah. aware of the tools such as Power BI, SQL, Python?
Yes, yes, yes. So you know all the basics of these tools, correct? Yes, yes, yes. Okay, okay. When have you completed a graduation, Prashant? In 2018. 2018. No problem. No. Yeah, So as far yeah. as you have good experience, you are already working in a corporate, okay? Uh, Yes, you definitely want to get in this in the field of data analytics. This is the correct time, okay? And you yes. can also Okay. incorporate few of the AI tools, okay? Which I will guide in the near future, okay? Yes, sir. Sure, sir. Thank you. Yeah. Yeah, Next, yeah. yeah. Next, guys, Monis Heather, Lipakshi Vedya, Shruti, Sai Krishna, Hello, Shubham. sir. Yes. Who's this? Sir, Kishan Mudaliar here. Kishan Madliar. Hi, Yes, Kishan. sir. Yes, sir. Good morning, and thank you for opportunity to speak in front of this guys. And myself, Mudaliar Kishan. I am from Gujarat, Ahmedabad. Currently pursuing BTech CSE third year in Silver Rock University. And my current, like, what can I say, field is for data analyst. So I came with here as a SQL. Oh, nice, nice. So, which year are you in, Kishan? You're in third year, fourth year? Third year, sir. Third year Oh, CSE. oh, nice, nice, nice. So you have one more year to complete, correct, Kishan? Yes, sir. Yes. Okay, and you have interest towards data analytics in the field of data analytics. Yes, sir. Data analyst. So I completed Python in that NumPys and Pandas. So I want to learn SQL from basic to advanced. So I came here to learn that quickly and very strong. Yeah, yeah, very nice. But it takes time, Kishan. If you want to learn SQL from beginner to advanced level, make sure that you give that sufficient amount of time so that you can excel that particular language. Okay, Kishan? Okay, sir. Okay. Okay. So for as you are already currently studying, okay, it will be an added advantage for you to add such tools. And as soon as you are completing your graduation, you can do some sort of internship side by side and fetch a job easily. Okay, I have a lot of students who are being in their third year or fourth year, and they have learned a few tools and done some internship and landed up with a very good job. Okay, Kishan, all the best. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Next, guys. A very good morning, sir. This side Sapna. Mm-hmm. So I'm from Amar Sir's team, morning batch. Okay, nice. Hi, Sapna. Hello, sir. How are you? I'm good. I'm good. I'm good. Tell me about yourself, Sapna. Yes, sir. Sir, my full name is Sapna Mandal. Currently, as if I'm not working, as I'm just doing the motherhood. So my Mhm. career, sir, I Which have is a the brief noblest job. experience. Which is the noblest job because I so my wife has also left the job and she's now currently taking care of my kid, and I think if she is not taking care, the responsibility will come on to me as well. So we have just we have just divided our work that she's currently handling, and I'm looking after their finances. So it's like Hand to basically hand. hand to Yes, hand. sir. Yeah, yeah, that way. Definitely, sir. So, like basically, I have done my graduation and my master's in business management. So, I am from a HR background. So, like before till my last year of working is 2021 before COVID. After COVID, I was completely like a homemaker. Mm-hmm, Now, like oh, my kid is now 12 years, 13 years going to be. mm-hmm, So, want to restart my career. So I am not from a technical background, though I am from a human resource management team. So now I want something in the technical. So I had a talk with your team that whether this will, I want to be something like in the present scenario, this one data analytics is going on. So mm-hmm. though if I will get a handful of experience on that, I want to go in that field to start my career in a new path. Nothing like it. So Yeah, yeah. yeah, so So that is my journey. And from last 12 years, I am not working. That is the present scenario. that's okay. That's okay. Uh, Whatever has been past, you can't do much about it. But Yes. currently, you definitely have your future in your hand and also your present. Okay. So Yes, sir. you just have to be regular with the studies, with the lectures, and also with the mock interviews. And if you're good with that and you're coping up with that, nothing can stop you to fetch a very good job, Sapna. Okay. Okay. That's what we can assure you. Okay, Yes, because sir. in the starting of the lecture only, I told you that irrespective of your background, irrespective of your career, irrespective of your career gap,
if you are dedicatedly giving like 3 to 4 months into this field, okay, you will end up a decent job basically. I won't give a expectation that you will get this much of salary. No, I am I'm a realistic person. I believe in facts. Okay, so I will rather give a minimum value कि ये तो आपको मिल सकता है for sure, but the criteria is that you have to be regular because these tools require a lot of practice अपना. Okay, because Definitely. I was also from a non-technical background. So I have almost 14 years of experience. Okay. In that 7 years, I was into core marketing and sales. I was fed up with sales and marketing. Every month का target से मैं परेशान हो गया था. So eventually I thought of switching my career and I got into data field of data analytics. So I was totally new what is SQL, what is Power BI, what do you say, ETL tools. I was unaware about that, but I knew that I had to change my career. I don't want to be into the sales and marketing field. So I transitioned and I started liking it also. And every day is a challenge for you in the field of data analytics. It's not a monotonous work. Okay, so it's always like you're on the edge of your seat whenever a projects come to you. Okay, the scenario is different. Okay, the difficulty is different, the logics are different. So it's a very interesting field, Sapna. And now, as AI has also incorporated, the work has become little easy for us. Okay, so पहले अगर कोई issue आता था, उसको debug करने में बहुत time लगता था. But now, if you can incorporate AI, and this makes your life little easy. Okay, so AI and other things are not, they will not take up your job if you don't incorporate those tools into your what do you say, professional career. Daily Okay, practice. yeah, so that is the only thing. Nobody will take your job. See, as years are passing, okay, there are some advances that has been happening. Okay, if you don't cope up with those tools, आप उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो you're left behind. That is the only thing. Okay, so Yes. lot of people are lot of people fear about losing their jobs, or maybe मैं आईटी में घुसूं नहीं घुसूं सब. ऐसा देखा जाए तो हर चीज रिप्लेसेबल है. It's just that you have to incorporate few tools, few things that will that so that you can survive in this field, and not in this field, irrespective of any other field. ऐसा लगता है कि replace everybody is replaceable. It's just that you have to be well aligned with the tools, upcoming tools that are there. Okay, and you have to keep upgrading. अभी ऐसा है कि मैं डेटा इंजीनियर हूँ, ठीक है. Now I want to become a data scientist, so I study accordingly. I still study, so I have not stopped studying. And this is a field, it's like constant upgrading is required as and when. Okay. Yes. So all the best, Tapna. Thank you, sir. Yeah, welcome. So just one query is that I'm looking for something like definitely I will get a remote job from this because I have already talked with your team Mm-hmm, because it's concerned ki like I don't want to be like a particular. It's okay because it depends. Being you understand, being a mother, we need to give the time to our kids. mm-hmm, mm-hmm. Okay, okay. So that is the thing I have talked with ma'am also, Pratik sir also, and even to Amar sir also, and they can find me okay. Like definitely you will get that one. Okay, so Sapna, what is I'll be very straightforward in this case. Currently, I am working from home. I have got the opportunity because I was looking for one. But see, most of the companies are coming up with the ideas of working from home, but that totally depends upon the company's ka requirement, and currently the position is open for you or not. Okay, so that Okay. totally depends upon the position. But I would also recommend, don't lose an opportunity when you are getting a job, but it is hybrid mode, or it is hybrid mode or completely going to office. Okay, don't miss that opportunity because you are transitioning your phase from a housewife to a corporate person. So initially I would recommend you to go to office for some few months to get well Okay. acquainted to that atmosphere basically. Okay, so chances are high that you might get a job that is remotely, but guarantee नहीं है because वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको वर्क फ्रॉम होम देना चाहते हैं कि नहीं. But chances are very high looking at the current scenario. Okay.
Okay. या चलेगा. Hope I've answered your questions, अपना. Yeah, sir. Actually, the problem is that like why like all those days my husband is in the field, like he has to travel most of the time. Mm-hmm. Most of the time like he will be not at home, so there Mm-hmm. I have to take care of each and everything, like my kids activities, taking him to the classes, bringing him, and apart from that also I'm managing my studies. Like early morning 7:30 this your class will start, so I have to rush him, pick him, drop him, all the things. So like I think few, not too much, but at least like if it is the hybrid mode also, so once like 2 days in a week I can manage it. So, सपना but में at the same एक time, I'm not very stick with that, what you said. Whatever करेक्ट. first we'll see what are the things are यस. coming up, how I can face it, what I'll pass and what I get, according to that, we'll decide. यस, डेफिनेटली. सी क्या होता है ना, जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है एंड यू बेसिकली आप पानी में उतर जाते हो, तो यू स्टार्ट मैनेजिंग थिंग्स अकॉर्डिंगली. सी एज सुन एज यू गोट अ जॉब, आप सोचोगे कि कैसे स्टार्टिंग के फ्यू डेज ट्रांजिशन करना डिफिकल्ट होगा. बाद में आप यू कैन आउटसोर्स ऑल्सो फ्यू थिंग्स, कि आपने एक मेड हायर कर ली बिकॉज यू विल बी अर्निंग दैट गुड अमाउंट ऑफ मनी. आप कुछ चीज मैनेज कर पाओगे. बेसिकली यू विल फाइंड सम ऑफ द अदर वे दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर यू, सपना. ओके. Mm-hmm. सो वो चीज ऑटोमेटिकली आएगी. जैसे अभी शादी होती है, फिर बच्चा होता है, तो ऐसा लगता है कि कैसे संभाला जाएगा. इवेंचुअली जब 2-3 महीने हो जाते हैं तो वो बच्चा संभालना भी आ जाता है, साथ में खाना बनाना भी आ जाता है, साथ में फैमिली को हैंडल करने भी आ जाता है. एंड गर्ल्स तो हैव अ सुपर पावर, दे कैन इवन रन द होम, do a job, and do a lot of simultaneous. They are multitasking. They are good in multitasking. Whereas I feel I am not very good in multitasking. So वो चीज incorporate कर लेते हैं लोग, and they find a way out. You have to. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. मैं फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो अभी तक हो चुका है, एंड जो मैंने लोगों को देखा है उसके बेसिस से बात कर रहा हूँ मैं, सपना. ओके. Okay. ठीक है. Sure, sir. Yeah, but definitely in your case, we can try for work from home opportunities. Okay. So as and when we have opportunities coming in our way, as soon as you have completed the course, and we'll definitely share such opportunities with you so that you can apply those job first. Okay. We'll give priority. Okay. Sure, sir. Yeah. Sure. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Welcome. Yeah. Next, guys. Who's next? Hello. 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 Hi. Hi, Shubham. Good morning, sir. Good morning, Shubham. Uh, Actually, I am from the agriculture background. Mm-hmm. That's okay. Yes, my bachelor's in BSc in agriculture and my master's in MA in agribusiness management. Oh, nice, nice. It's amazing. So, Right. okay. So So I why passed this my. field? Why this Uh, field, Shubham, then? okay, okay. Let me explain. I am working as a freelancer, marketing freelancer, Mhm. from the last 4 to 5 years. Okay. And as like this is a tech job. I want to transform my career. Like I want समझ to गया. enter in the corporate jobs. Like वेरी नाइस, वेरी नाइस. बट आपको right. इसमें इंटरेस्ट है? कैसे कैसे इंटरेस्ट जनरेट हुआ, शुभम? आई वांट टू नो दैट फर्स्ट. मैं अभी देखिए, मैं 1 साल से थोड़ा सर्च कर रहा था कि क्या कर सकते हैं, कुछ मतलब अलग कर सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं. मैं कुछ आईटी कैंपस में भी गया तो उन्होंने टेस्टिंग वगैरह वो सब दिखाया कि ये फील्ड है, ये आप कर सकोगे नहीं कर सकोगे. उसके बाद में कुछ एक दो दोस्त है मेरे जो डेटा में काम करते हैं, ओके. तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये तू देख, बोले पहले थोड़ा समझ, बोले अगर तेरे को लगता है इंटरेस्ट है तो कर, बोले. तो उसके बाद में मैं एक्सेल वगैरह का एक कोर्स लिया था, वो किया. और ऑनलाइन में ही एसक्यूएल वगैरह का थोड़ा डेटा देखा, कैसी कोडिंग होती है, क्या होती है. वेरी फुल. नाइस. हाँ, तो उसके बाद में लगा कि मैं कैप्चर कर सकता हूँ ये चीजें. तो मैं मतलब रेडी हो गया है कि नहीं, करते हैं इस चीज को. करेक्ट, करेक्ट. आप हाँ. प्रतीक गेडम या इसको जानते हो क्या, यश? हाँ, प्रतीक प्रतीक नहीं, सॉरी, आकाश. आकाश. ओके, 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 ओके. गॉट इट, हाँ. गॉट. ठीक है. शुभम, द ओनली रिक्वायरमेंट, मैंने जब इनिशियली बोला कि अगर जैसे आप ट्रांजिशन कर रहे हो और आपने थोड़ा हम्म. सा बैक स्टोरी पढ़ के आए, व्हाट इज पावर बीआई, एसक्यूएल, डेटा एनालिटिक्स, आपने हम्म. कुछ तो हम्म. तो आपको आइडिया है.
ठीक है। सो बिल्कुल। अगर आपको ट्रांजिशन करना है ना, बट मेक श्योर करना कि 3 to 4 मंथ जो कोर्स रहेगा पूरा, उसमें आप पूरा हम्म पूरा तरह से ध्यान दो। ठीक है। जैसे हम्म ही हम्म आपका कोर्स पूरा हो जाता है साइमल्टेनियसली, जैसे कोर्स होगा कंप्लीट होगा तो हम लोग आपको मार्केट में भेजेंगे। उससे पहले मॉक हम्म इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। ठीक है। मेक श्योर करना वो हम्म रेगुलरली अटेंड करो और पढ़ाई रेगुलरली करो। मेक योर हम्म नोट्स एंड गो इन टू द मार्केट एंड फेच इट अप अकॉर्डिंगली। ठीक है। एज ए okay। वैसे भी आप ऑलरेडी इस सब चीज़ में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है बेसिकली आपको, तो कुछ इशू नहीं होगा शुभम। ओके। हम्म। इट इज अ वेरी गुड फील एंड तो मैं एक चीज, मतलब मैं जितना देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में भी जो कंपनीज है उनको भी एनालिस्ट लगते हैं। हर किसी कंपनी को, मैं एक्चुअली वही बोलने वाला था आपको कि हाँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी की थी, मैंने मैंने हम्म। बीई नहीं करा है। बाद में मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह बहुत किए हैं, तो मैंने अच्छा। बायोटेक्नोलॉजी नहीं किया। तो जब मेरे को एक फार्मा का डोमेन का प्रोजेक्ट मिला, रिपोर्ट बनाने मिली, हम्म तो मेरे लिए हम्म कंपैरेटिवली इजी था वो बनाने के लिए। हम्म। ठीक है। हाँ। सो अभी मैं एक बीएफएसआई डोमेन में काम कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म सो जिसका नॉलेज मुझे नहीं था, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस का अपना फील्ड नहीं था, अपन साइंस बैकग्राउंड के। हम्म ठीक है। हम्म बट वी एज पावर बीआई डेवलपर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन दैट वी बीन गिवन टू, हमको लॉजिक्स पता होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमारा अगर डोमेन फेमिलियर हो तो इजी हो जाता है, वरना वो एक नया डोमेन एडअप हो जाता है तुम्हारे रेज्यूमे, जो कि फ्यूचर में तुमको इस डोमेन में अगर काम किया तो तुमको एक अलग 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 से कंसिडर किया जाता है बेसिकली। पहले मेरे पास है ना, मैंने सेल्स में काम किया था, मैंने फार्मा में काम किया, फार्मा डोमेन में काम किया है बेसिकली। हम्म मैंने एफएनबी में भी काम किया है। तो मेरे हम्म मेरा भाई का बिजनेस है बेसिकली फूड एंड बेवरेजेस में, तो मेरे को हम्म उसमें भी आसानी होगी बिकॉज आई टू हेल्प हिम। ठीक है। सो हम्म फिर अब मेरे पास कभी बैंकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बैंकिंग में रिपोर्ट नहीं हम्म बनाई थी मैंने। अभी हम्म करंटली आई एम वर्किंग विथ 3i इन्फोटेक, मेरी कंपनी का नाम है, हम्म विच इज स्टाफिंग कंपनी। सो आई हैव बीन हायर्ड बाय क्रिसिल। क्रिसिल बहुत लोगों को पता होगा। क्रिसिल विच गिव्स क्रेडिट रेटिंग टू ऑल द कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब हम्म का क्लाइंट है फैब, विच इज फर्स्ट अबू धाबी, विच इज इन दुबई बेसिकली। ठीक है। हम्म तो मैं इनडायरेक्टली, इफ यू जस्ट सी, मैं मुझे हायर किसने किया है और मेरा क्लाइंट कौन है, एंड इनडायरेक्टली मुझे पता नहीं था कि मेरा बैंकिंग डोमेन का मुझे क्लाइंट मिलेगा, क्योंकि इफ आई एम हायर्ड फॉर अ कंपनी, आई वुडंट बी नोइंग कि उनके क्लाइंट कौन से हैं। ठीक है। सो हम्म इवेंचुअली मुझे मेरे प्रोफेशन में, मेरे प्रोफाइल में एक बैंकिंग का डोमेन भी ऐड हो गया, विच इज एन एडेड एडवांटेज फॉर मी। मैं चाह रहा था कि वैसा भी हम्म कुछ ऐड हो जाए। सो अभी जैसे आपका एग्रीकल्चर है, फॉर श्योर India is a land of agriculture. There are a lot of companies who uh, are who have a setup, who have an organization, who are dealing with some agriculture factors and everything. So if you हम्म happen to apply in those company, you will be हम्म preferred first because आपके पास knowledge है. On top of that, you have also Excel few tools such as Power BI, SQL. So आपको कंसिडर हम्म पहले करेंगे शुभम उसमें। ठीक है। ओके। तो अभी जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जिन्होंने बायोटेक किया था, उनको भी रेफर किया मैंने, एंड वो फार्मा हम्म कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनके लिए इजी हो रहा है। उनको प्रेफर पहले कर रहे हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा है। ओके। हम्म बट ये नहीं है कि अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, एक एडेड एडवांटेज है बेसिकली। ओके। ठीक है। जैसे आप कोई फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, जर्मनी जर्मनी में जा रहे हो, आपको जर्मन आती है और आप सीख रहे हो, तो जर्मन को जिसको आती है वो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे ना, ऐसा नहीं कि जिसको नहीं आती है हम्म उसको टाइम नहीं देंगे करने के लिए। सो इट्स लाइक दैट शुभम। गॉट ओके इट। ओके ओके राइट। यस। अच्छा क्या तुमसे तेरा था यस मोहम्मद। इतने जरा को रखते रहे आप उसको तो आज आप हाय। लीजिए फोन कोई भी हाय। बैंक हाय मोहम्मद हुसैन, आपने अनम्यूट किया था। नेक्स्ट गाइस, हु वांट्स टू टेल मी अबाउट हिमसेल्फ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाय। Hi, sir. I am Sankara Jyoti from Tamil Nadu. ओके। हाय शंकरा। Yeah, I'm a recent graduate in artificial intelligence and data science with a CGPA of 8.5, वेरी and नाइस। I have 6 months of hands-on experience as a data analyst intern, where I analyzed sales data, identified key trends, and built dashboards to support data-driven decision making. And also, I am skilled in Python, SQL, and Power BI, and I have developed multiple projects including sales dashboards and customer behavior analysis dashboards, and also workforce productivity analysis. These are focusing on extracting actionable insights from the data.
And Uh-huh. also, I am trained in DP 900 and PL 300, which has strengthened my understanding of data fundamentals and visualization. So, Okay. currently, I am seeking a data analyst role where I can contribute effectively from day one while continuously enhancing my SQL skills through these type of workshops and hands-on practice. Very nice, very nice. So, if you want to rate yourself in terms of tools such as Power BI, SQL, Python, EDF, how much would you rate from 1 to 10, Shankara? What, sir? Can you repeat me? No, I'm asking if you want to rate yourself in the Ah, efficiency of such tools such as Power BI, SQL, ADF, Python, as you said, in the ah. range from 1 to 10, how much would you rate yourself, Shankara? I think it will be 8. 8. So you're well aware about the tools and everything. So Ah, yes. what you can do na, Shankara, you can also uh, you can also join our mentorship program, specifically the students who are already equipped with such tools. We have Okay. mentorship programs wherein we give mock interviews. We take mock interviews of the students. Okay, Okay. so I Okay. had a lot of students in the prayer as in few months back, like peer experience, that people who are well aware about such tools, okay, and they've already worked for some time, what they can do now, they can come up with the mock interviews and we can help you to get a very good job, because I also conduct interviews in my organization, so I Okay. know the level of questions that has been asked in the market. Okay, so I can Yeah. help Yeah. with Yeah. that. Yeah, Yeah. the Yeah. I before, am looking for. yeah. I'm looking for a work from home opportunities because. That is not in Uh, my hand, Sankar, I'm so sorry. because I already received two offers in a campus interview for on-site data analyst. Okay, okay. Due to my father health conditions, I cannot. I'm not willing to relocate for that position. What? Acha. Anything? You have any health issues, Shankara? No, no, I am not. My father has a health issues, so I need to stay in a home. Okay, 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 got it. Shankara, you can definitely try from work from home, as I also discussed with Sapna. See, that is not in our hand, but chances are very high looking at the current scenario. People are getting. I'm completely working from home. I just go once a month to my office, but I was also looking for a opportunity that is work from home, because I have a small son, I have a mother to take care of, and I also take classes and other activities that I have to do it, and it is more feasible for me to if I work from home. Okay, but uh, again, I would like to tell you that, Sankara, that is not in our hand. Okay, that totally Okay. depends upon the company, and the company has some openings, and they are offering work from home. Okay, so Okay. I have also seen wherein initially they have offered work from home, but later they have revoked that access. They ask they ask employees to either come from work, come to office, hybrid, in hybrid mode, that is 2 days office, 3 days working from home, or vice versa, or else completely work from office. So uh, I would not recommend you go for entirely work from home, because you might lose some opportunities, very good opportunities, because of the fact that you want to work from home, Sankara. Yes. Yes. Okay, Yes. because see, there are also a lot of things that data integrity, okay, comes into picture. Data security comes into picture. When a person working from home, this thing is on stake for the company. Okay, Yes. so they see a lot of parameters before offering that person for work from home. Okay, Okay. so currently I am working for a BFSI banking domain. It is a secured environment. For every small thing, we have credentials, we have access issues and everything. Okay, and at Yes. times, so I don't even have, in few scenarios, I don't even have access for chat GPT as well, because of their some security issues. So Okay. that total depends upon from company to company and their requirement. And so at times I also see that what you say, the company size is big, but currently they can't accommodate a lot of people at the same time, so they give hybrid mode as well. So for instance, if I have a company strength of 500, but I can accommodate only 300 people in a day, so what I will do, But I heard there is MNCs like Deloitte and Accenture. They are always providing a remote jobs for a not data necessary, analyst. not necessary, Sankara, not necessary. So I recently had a placement when one of my students got placed in Deloitte. He or she got a hybrid mode.
and Okay. I had also an experience wherein he had a work from home. I also had experience with some other company, EY basically. They initially told the person that they will give work from home. Later 6 months, they asked the person to come to office and work. Okay, Okay. so Okay. it is nothing is fixed in corporate basically. They can change it according to their convenience, Shankara. Okay. Ah, yes, yes. Yeah. So Yeah. in my company also, I had a friend who was working completely work from home, sorry, work from office, and later she got shifted to some other project wherein she got an opportunity of working from home. Now she's saving 4 hours of her time of traveling, because in Mumbai it is very difficult. Okay, Yeah. Yeah. that way it is. So the total depends upon the requirement of the company, Shankara. Ah, yes, sir. Yeah. Yeah. Hope I've answered your question. Yes. Yeah. Yeah. Anyone else, guys, wants to introduce? Hello. Okay. You can ask any doubt, guys. I am okay with anything. It's just that I want so that if you are entering into the field of data analytics, if anything is there in your mind, you can clear it then and there. Okay. If none of them have any doubt, and if you want, I can proceed with the lecture, guys. Okay. So today, guys, this is a boot camp so that you can take a decision that you want to get into the field of data analytics or not. As I already discussed, I am into this from last 7 years, and I'm working as a data engineer from last 7 years. And moreover, I have expertise in Power BI. I even hold a certification in PL 300, and I will apply for DP 700, DP 900, sorry, which I have not applied for. But I'm working on tools such as Power BI, SQL, Python, okay, and ADF, okay, ADF and Databricks. So these are the tools I majorly work into. Initially, I was a data analyst, and later I had to upgrade myself, and I learned tools such as ATF and Databricks, and my company requirement is also that we had to learn ADF and Databricks. Okay, so currently these are the tools that I'm working with majorly. Okay, so let me just start. So guys, w- Excuse me, wha- sir. yes, Apna. Sir, I have a little concern because I have a query that being like I am from non-technical background and Amar sir has started from the Power BI, the batch I have joined. Mm-hmm. So, would you suggest me like so along with the Power BI, I should like something like keep on practicing on the Excel so that it will be very helpful for me or insightful for being like this one going to with the BIs and later on the courses like SQL and the advanced forms what you are people are going to teach in the future. Yeah, so see, if you get into field of data analytics now, these are the basic requirement that you need to learn. Initially, only with Power BI also people used to get job. Now company needs Power BI, SQL. Excel is basic requirement. You don't need advanced Excel basically. Okay, but if you have decent knowledge about Excel, no, that will be sufficient for you. But in our course, in the field of data analytics course, we'll be teaching Excel, SQL, Power BI, and other tools. But Yes, sir. learn one tool at a time. Don't do two tools at a time. If you are very new to this Okay. field, into this field, go one tool, be an expert in that particular tool, and then next tool. Okay, that's what we've been following. So we have morning and evening batches. Okay, and Yes, sir. we are both working as a data engineers and data analyst in our respective company. Okay, and we know how the trend is moving. Okay, and we won't rush up with the tools. Okay, because we will try to make you understand from scratch, irrespective of the fact that you have learned Power BI, SQL from other institutes or other organizations. No, sir. No, no, no. You're getting me. I'm not going for the other organization. I No, no, said no, being like, no, 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 I'm saying irrespective of the fact, not you, okay. in general I was saying.
Okay, sir. Yeah. Because I thought ki I should like being I am well, I will not say being I told you that I am from a HR background. I do work in the Excels and but not in a very advanced level, because though like there is so many updation is also there. So I keep on asking Amar sir also, because whatever like the people are in my even my batch, they have a like fair idea of SQL like and the other technical things. I Mm-hmm. think so. So like on the same thing, like have a concern, means there is a doubt with me that ki, do I should have practice like a handful of some other thing also, so that like it will make my learning more better. Mm-hmm. Correct, correct. That's what I'm saying. Just go with the flow. Okay. Yeah. How your mentor is helping you to learn those tools. Just go with Yes, that sir. flow. See, we are very inquisitive when we are totally new to this field. क्या मैं ये कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, क्या अच्छा रहेगा मेरे future के लिए? But eventually your question will be answered as and when your course is progressed. And at the end, the amount. See, I considering that the fact you're from the HR field, you will be well equipped with Excel and the amount of Excel that is needed for data analyst. Data analyst. Hmm. Data analyst. Yes, sir. Okay? You will not be going as an Excel expert. You will be going as a data analyst, wherein Excel is a data source for you. Yeah. Got it? Yes, sir. If you That know, is. if you know VLOOKUP, HLOOKUP, if you know how to find index, that is more than sufficient for you. Okay. There are other functionalities also which we will teach you here. That is a part of our curriculum. So we have. Actually, that is easy for me also, means because the way sir is also, you people are going to be very frank, it is very easy for means it's learning is very good. It's Yes, going yes. very nice, and for me also, I'm like it is very interesting. Seems to be being from I was interested like as looking for something in technical, Mm-hmm. and I feel that I am in the right path, because whatever sir is teaching, and I trying to every day to follow. Though I'm facing some problems, but yeah, Mm-hmm. I am like resolving the things with sir, and I'm feeling very happy with this one, like Yes, the yes, way yes. the things are going on and whatever the queries are, you both are Mm-hmm. like wonderful in solving the things. Never teach like they go, okay, you are not like never in the rush, okay, you don't know, or you should go through this one, learn from that. So really really great with that. Thank you. Because we both are from non-technical background. We know I how don't to. know about no I think Amar sir is also like from Amar sir is a same thing. a commerce graduate, by the way. Yeah, he's also commerce graduate, But but the he way. but currently he is a head of data analytics. If Yeah, you he know, is a great mentor. Means what I feel like he is being from last amazing. 15 He is years. amazing. Yeah, he is just amazing. I told also, sir, you are just amazing. Means I never feel in the last 10 days that I am like something in trouble, or wherever I am not getting it, he will Mhm. repeat it 2 or 3 times. So for me, it's a very means this platform is for learning is amazing. Yeah, So thank you. I Means will a also lot. try my 100% to cope up with well wherever I sit. So Yes, I yes. also want to give my See, 100%. sooner or later everybody gets a job, irrespective of the fact that they have to study from the very first day. Because as a lot of people know what is Power BI and SQL, so this tools required continuous practice. Okay, Yeah. because it is decently easy. Okay, मैंने बोलूँगा बहुत difficult है, because these are low code no codes. कोडिंग बहुत कम Yes, sir. होती है, कोडिंग बहुत कम होती है सब टूल्स में बेसिकली. ओके. सो Ah. anybody can learn this easily, and with AI it becomes very easy also. अगर आपको कोड में आप कहीं डिफिकल्टी भी हो रही है, you can take with help of the chat GPT also. So life has become little easy. Is just that you have to incorporate few of the AI tool chat GPT in your day to day activity, so it makes your life easy. Okay. So, sir, the coding, what you say, the coding is not a part, but being, I think it's a completely a different field, because there's a different section for coding. People like what we are learning, it is a step ahead. Before coding will happen, then the data analyst will happen. See, coding, If I'm not wrong. you can't leave coding for sure, because Python requires coding. Okay, so if you Ah. want to become a data engineer, आप उसके पीछे वो पीछा छोड़ा नहीं सकते. Data analytics, Hmm. if you're currently working as data analytics, you can still get away with coding. But as soon as you progress in your career, you have to learn coding for sure. You can't get away from that coding. But as and when if you are there in a company for a couple of years, you will get to know कि कोडिंग ऐसी होती है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लर्निंग. सो एज सुन एज यू गेट इट द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, अपग्रेड योर सेल्फ. सो पाइथन वगैरह भी इट टेक्स टाइम, 3 to 4 months लगता है टू
to get Hmm. well equipped with Python. Okay. Okay. Then see, coding is like a sequence that you follow basically. एक सेट ऑफ पैरामीटर्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वरना आप कोडिंग नहीं कर पाते हो। आप ए बी सी डी है तो आप ए बी सी डी लिख सकते हो, आप डी बी ए सी नहीं लिख सकते हो। देयर इज सीक्वेंस दैट नीड्स Hmm. फॉलोड। Okay, that is why this coding looks difficult for a lot of people. Okay. Okay, yeah, there is a pattern, this fixed pattern that you have to follow. That's it. Okay. So it's a part. It is definitely a part. Coding is also definitely a part. Sorry, Sorry. sir. Huh. Coding is definitely, it is also part of this data analyst. You can say that if Python We is can. required, yeah, you can say that. Initially, I don't know, matlab, I was not doing a much of coding in initial career of mine, because moreover I was not doing Python. But moreover, if you go for data breaks, Python coding is required. You can't get away with coding. Okay. Uh-huh. Yeah, you'll get to So know. yes, sir. Currently, just Definitely. understand these tools like SQL, Power BI, Excel. Okay. In currently with these tools also, a lot of my students are getting job. But as and Hmm. when there are a lot of as advancement and people are learning a lot of tools, so we have, that is why we have included few more tools such as ADF, which is also a Yeah. low code, no code, which is a Microsoft product, which you will get to know. Uh, First, go step by step and learn a tool one at a time. One at a time. Yeah, Yes. yeah. Okay. Otherwise, Okay. Thank you. otherwise बहुत mix up हो जाएगा. No, sir. It was like going inside myself ki whether like things will go like that, because being it's a doubt section, we have to whatever the doubts I want Yeah, to yeah, clear. definitely. I'm okay with that. So See, and our agenda is yeah, in my main class also. A lot of people know that. Uh, I make sure that each and every person in my class understand and have an interactive session rather than just sitting in my lecture and moving ahead. I will not like it. I would have a one to see. I am also giving a 1 or 2 hour ka time with you guys. I expect the same with you, that it should be an interactive session, and I will get to know that you are understanding or not understanding only when you speak up. Okay. And if you want to get into the field of data analytics, you have to speak up, guys, because at times you have to speak to stakeholders, you have to speak to your managers, you have to speak to your colleagues. Okay, regarding, because you're dealing with data, and data is, what do you say, a very important aspect. Okay. And whenever you're discussing data, okay, either with your manager, either you're making reports, you're discussing with your stakeholders, this is the report. So speaking up is very important. So we also work on the overall development of a person in the classes. We ask them to switch on the camera, we conduct mock interviews on a weekly basis, so the confidence rises till the time they complete the course. Okay. So this is how we've been follow. See, I'm not saying that I'm the best teacher, but I can say you that we follow few tricks and tips that we have done in ourselves when we were new to this field of data analytics, and has helped us to get a very good job. And we've been progressing and we've been changing our job also. Okay. So and easily we're getting a job also, because we have inculcated few things into our day-to-day things basically, and that's what we share the same thing with our students. Okay. thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir. Yeah, welcome, Sapna. Okay. So guys, let us now get into the curriculum basically. So the tools that we will learn in this basically the entire course is primarily SQL, Power BI, Excel, Python, and ADF. Okay. So let me just start with what is data analytics. Can anybody tell me what is a data analytics in a layman language? क्या होता है? What is the role of data analyst? Anybody? Sir, analyzing and gathering actionable insights What from What do you mean by that? like making sense of raw data and enabling the management to take action based on the data. Very nice, very nice. Good answer, Sai Krishna. Sai Krishna, what do you do? As in, may I know Uh, what is your background? Sir, I'm from banking industry. Oh, I have nice. an Thank you, sir. So basically मैं भी non-technical background से हूँ. I've done my MBA
and I'm working in banking industry since 14 years now 15 years. My God, very nice, yeah. Thank you, sir. Uh-huh. And right now I'm looking to shift to a database role. Right now I'm in compliance. Got it, I got it. handle banking ombudsman complaints. So Okay, I okay. act as the nodal officer for my bank and Mhm. represent So my bank at RBI. So I was actually making some A score, B score report, which I was not aware of it earlier. So see, if you are if you are from the same banking field, no, banking field तो बहुत use करते हैं data analyst को basically, and the tools that are there, Power BI and SQL. So if you have good experience in the banking field, na, nobody can stop you to get a good job, irrespective of the fact you learn these tools efficiently, Sai Krishna. यस सर, तो मैं बेसिकली वही मुझे जानना था कि वेदर इतने साल काम करने के बाद विल इट बी feasible फॉर मी टू इट स्विच टू विल बी इट विल बी एडेड एडवांटेज फॉर यू कि आपको ये भी आता है, कॉम्प्लाइंस भी आता है, एंड यू कैन मेक रिपोर्ट ऑल्सो, साई कृष्णा. सो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपकी पहले की फील्ड पूरी छोड़ दो. यू इनकॉर्पोरेट दीज टूल्स ऑल्सो इन योर, सो दैट दे विल इंक्रीज योर पैकेज एंड यू विल वर्क ऑन दिस ऑल्सो साइमल्टेनियसली. या तो कंप्लीटली स्विच कर दो, वो भी करने को तैयार हो जाएंगे इफ यू हैव गुड एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर. Nothing like it. I have seen a lot of people who have switched their career from not banking, but banking में ही they have just switched their profile. ओके सर, That way. ग्रेट ग्रेट. Yeah, yeah. Great, great. So you've been working from last 14 years with RBL. नो सर, विद वेरियस बैंक्स, मतलब HDFC में 9 साल काम किया है. Nice. फिर 1 साल यस बैंक के साथ काम किया था. Mm-hmm. एंड 1.5-2 साल विद इंडसइंड बैंक, एंड करंटली आई एम विद बंधन You're with Bandhan. बंधन बैंक. Where are you जी located, Sai Krishna? सर, चंडीगढ़. Oh, you're from Chandigarh. Oh, nice, nice, nice. Okay. Yes. But अच्छा, मतलब आपने पावर BI एसक्यूएल के बारे में थोड़ा कुछ मालूम है साई आपको? ऑब्वियसली कंपनी में तो यूज होता ही है. सर एक्चुअली ना मेरे प्रोफाइल में इतना यूज नहीं होता है, सिर्फ एक्सेल ही यूज होता है. ओके, ओके, और एक्सेल में भी जो बेसिक अपना वी लुकअप वगैरह यूज होता है, इफ एंड वी लुकअप. ओके, ओके. गॉट इट, गॉट इट. तो यस सर. नहीं नहीं, ठीक है, कुछ नहीं. आप सही टाइम पे स्विच कर रहे हो, अगर आप करना है ना. नथिंग लाइक इट. जी, ठीक है, चलेगा. थैंक यू. So, guys, let us start. I will just share my screen. Okay. And yeah, before sharing my screen, I just want to give what is the role of analyst. Basically, a data analyst is someone who cleans, analyze, and visualize data to help businesses make better decisions. Okay. So points are to collect data from multiple sources like data sources Excel, Power SQL, MySQL Server, cloud systems. Okay. And as soon as you get data, okay, you have to also clean the data so that the data is in a proper format, so that you can make reports out of it. Okay, so that businesses can take a better decisions. Okay, so this is a majorly a role of a data analytics, wherein to collect, clean, analyze, and visualize the data to help businesses or companies to take a better decisions on that. Okay, guys. Yeah. Yes, sir. So let me just share my screen. Yeah, guys, can you see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So see, information I am talking to you, you talking to me doesn't make any sense if it is not stored somewhere. If I'm not recording my conversation, the conversation that we had so far, वो सिर्फ एक information रह जाएगी. Information stored somewhere is called as data, and data जहाँ पर store होता है उसको बोलते हैं हम database. Okay, so and whenever you want to speak to a database, okay, you need a language called as SQL, guys, which is structured query language. Well, Which is structured query language, guys. Okay, and why it is important, guys?
Because we need to store a data, okay, and data is stored on databases. Just say for instance, Excel is also a database, okay, but the drawback of Excel is it can store only 10 lakh of rows, basically 10 lakh of record. But whenever you're dealing with a huge amount of data, Excel is not sufficient, and Excel has a lot of limitations also. That's where database comes into picture, जहाँ पर you can store a huge amount of data. So if I name few of the databases, you can say MySQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, okay, Postgre, okay, and these are the databases that uses SQL as a language. What is SQL? SQL is basically structured query language, okay, and if I tell you the what you say benefits, it's like it can store huge amount of data, okay, quickly accessible hota hai, data changes on a regular basis, and multiple simultaneously changes in your data, share a huge data set among many people. So these are the points why SQL is important, why database is important. And to interact with SQL, so database, we need a language. So I am talking to you, you talking to me in a language called as English, Hindi, or any other language. We are able to understand each other, because we are using a common language. So in the field of databases, you need a language called as SQL. So let us just go through the history of SQL, which is like SQL programming language was first developed by IBM researchers called as Raymond Boyce and Donald Campbell in the year of 1970s. Okay, it was initially known as SEQL, which is structured English query language. Later it got changed to SQL, guys. Got it? So SEQL, SQL is one of the same thing. Initially it was structured English query language. Later it got changed to SQL. Okay, so why SQL? So SQL stand for structured query language. It is used to communicate with the database. Okay, SQL statements are used to perform tasks such as update data. So whenever if we have data, either we update the data on the data, or retrieve the data from the different databases. Okay, some common database management system, which is the database basically, that use SQL. SQL as a language is like Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server. These are the big databases which use SQL as a language. Okay, so to understand data, okay, there is a structured data and there is unstructured data. Okay, structured data, what do you mean by structured data? Data stored in a table, in the form of table, is called as a structured data, guys. So okay, what is unstructured data, guys? A text, okay, for instance, CSV file, okay. So whenever a data is stored in a structured format, it's ideally a table format, okay, and table consists of rows and columns. So if you just see the example of a table, if you just see, these are the columns: position type, title, educational requirement, functional area, max pay, minimum pay. These are the columns that we have, okay. And if you just see 1, 2, 3, 4, these are the rows that I have in that particular table. So a table comprises of a column, which is common for everybody. For instance, a position title will be common for all the what do you say, people, okay, and educational requirement will common for all the people. Same goes functional area, max pay, minimum pay, and these are the rows that we are that we have, which will have individual identity. For instance, this particular person is an executive assistant and he has an associate degree. He is from human resources. 60 pay, maximum pay is 60,000, minimum pay is 40,000. Okay, so this is the individual identification of a person in term. So if I say this is particularly a one row, okay, and if you consider what is the maximum pay for SW engineer, you will say this point. So this is a data point, a data value, okay, a single point, a cell in a Excel, correct? Excel hota hai na? So this is called a data value. Okay, so here this entire thing is called as a table or a object, okay, which is a basically a structured format where tables are stored into a databases. So databases comprises of tables,
Okay. So why SQL? Because SQL is majorly used uh, in the global market and still holds the highest amount of percentage. Okay, so if you just see the amount of SQL is being used around the market is 55% SQL. Why after almost 50 years also why it is so important? You can understand that the importance of SQL as a language as compared to other languages that we have in the market. Okay, so we have different types of databases, guys. So for instance, Excel is a database wherein uh, it uh, it is stored, data is stored, and it is called as DBMS, database management system, because it is just storing the data. Okay, and we have other databases called as SQL Server, MySQL, Oracle, Azure SQL, SAP HANA. These are different types of databases, okay, wherein a data is stored in a structured format, okay, and the table are have a relationship between the tables have relationship between each other. इसके लिए उनको बोलते हैं RDBMS. Database management system to hai, but they have relationship. The tables have relationship between each other. You can create a relationship between the tables. That is why it is called as RDBMS. Whereas this thing is not achievable in Excel. That is it. That is why it is an example for DBMS. It is just storing a data. It is a system which is storing a data, but relationship cannot be created. Okay. Whereas here we can create relationship. ठीक है, जैसे एक्सेल में हमारे पास एक शीट है, दूसरा शीट है, ठीक है, उसमें हम रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते। या तो हम लोग वी लुकअप कर लेंगे, इधर वी डू अ वी लुकअप और एच लुकअप और एक्स लुकअप टू create some sort of relationship. But in big databases, wherein Excel has limitation, it can store only 10 lakh of data. This can store unlimited amount of data. Okay, so आप database लेते हो, for instance, I am a company, I have database called as MySQL or SQL Server. So these are Microsoft products. Okay, I will ask them to install this particular databases into my company. Okay, and I can buy the space to store data into my databases. So the amount of space that you are buying from that company will be equivalent to the amount of data that you store into that particular database. Okay, Excel can store only limited amount of data, and that is why it is not feasible when you store a huge amount of data. Okay, and why RDBMS? RDBMS is like whenever we have relationship, जैसे ये tables हैं, we will have multiple tables into a databases. Whenever you can create relationship between the tables, okay, it is called as RDBMS. Okay, Excel में if you want to update, delete, you can directly, for instance, I am writing Yasser, okay, and I'm editing also, okay. So whenever Excel me, you can do that. You have the what do you say, authority and liberty to do that. But whenever you're interacting with a database now, you need one more tool to interact with the database. For instance, I have a database called as SQL Server. To interact with this particular, अगर मुझे यहाँ पे कुछ change करना है database में, I will be needing one more tool to interact with the database. So in SQL Server, it is SSMS. Okay. In MySQL, it is a workbench. For Oracle DB is SQL Oracle Developer. Azure SQL में है Azure Portal. SAP HANA में है SAP Bots. So these are added additional applications, which is also called as integrated development environment. So whenever you want to interact with a database, you need such applications to interact with them, like SSMS, Workbench, SQL Developer, Azure Portals, SAP Bots. Okay, these are also called a front end or environment so that you can interact with the databases. Correct, guys? Any doubt so far? What are databases and So mhm, I have a doubt. You told me structured and unstructured data in SQL. So mhm, structured data will be in the table form, which we have learned already in the IBM. So in mhm. IBM's, sorry, sir, not IBM, BI, this one. So in BI, sir, we have downloaded CSV files that are also in the form of tables only. नहीं, वो कन्वर्ट हो जाता है टेबल्स में. When we transform them. यस, क्योंकि यहाँ पर कॉमा होता है.
CSV is comma separated file. Okay. If you just see, it is not in Okay. table. See, Power BI is a very powerful tool. It converts your CSV into tables. Tables, Okay. yes, sir. Yeah. So we have a connector in Power BI. So you can take CSV as Excel, and automatically it will convert into a Yeah. table format. Because Yes. whenever you want to do a report, you need proper tables to analyze that data to make reports. Yeah. We Understood? went to the Power Query window will open in that Yes. and we transfer the thing. नॉर्मल Yes, I got नॉर्मल it. नॉर्मल टेक्स्ट भी है ना, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड हाँ, डेटा है, और वही फॉर इंस्टेंस आपका टेक्स्ट है, उसको आप टेबल में कन्वर्ट करो, वो आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो जाता है. ठीक है. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस, इट शुड बी इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, सो दैट it becomes easy for you to interact with the database. Got it? Clear? yes, sir. Yes, sir. Yes. चलेगा. Right. Abhi, these are the few databases that we have currently in the market, which are majorly used by a lot of companies, which like PostgreSQL, SQL Server, IBM, SQL, and Oracle. Okay. Moreover, I deal with databases like SQL Server, Oracle in my current organization. Okay. So currently, if you guys see, guys, I have this particular data base. For instance, consider करो ये एक Amazon का e-commerce का database है. Correct? If you just see, this is the customer data, okay, wherein I have customer ID, customer name, customer location, customer phone, product, quantity, and MRP. Correct? अभी यहाँ पर आप देखोगे, if you just see, I have a customer can buy multiple products. Correct? That is why it can have multiple entries. So I can see this person have customer ID is 1, okay, name is Yasser, location is Mumbai, phone number is this, product is this, quantity is this, MRP is this. Okay. अब यहाँ पर जिसने कुछ बाय भी नहीं किया है, उसके भी प्रोडक्ट आ गए हैं एंड MRP आ गई बेसिकली. सो everything is been dumped into the same table. Okay. Can anybody tell me, do you see any sort of deformities or anything wrong in this particular table? कुछ गलत दिख रहा है आपको टेबल में गाइस? If you just see this particular table, guys, do you see anything wrong in this particular table? So when we talk about a good data, okay, does this particular table falls into a good data category, good table category, good data, structured data category? Though it is in a table format for sure. So consider this is a table, and we have this particular columns and values. So can anybody tell me, is it a good data or a bad data? And if it is a good data, why it is a good data? If it is a bad data, why it is a bad data? The Tell me your customer ID is missing. customer ID is Yes. okay. Yes. Okay. And Some information is also missing, sir, okay. And Missing values. like okay. quantity and in some MRP. Okay. Okay. And So ये आप लोग की वॉइस ब्रेक हो रही है मतलब. duplicate contact number. डुप्लीकेट, हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज. ठीक है. यस. यस. Customer मोहम्मद, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बराबर से नेटवर्क में आके बात करो. ठीक है. सो गाइज, आई कुड हियर अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई कुड सी मिसिंग वैल्यूज. Okay, I could see duplicate values. Okay, and everything is been dumped into the same table. So if I just come here now, I will tell you the answer. See, I can see a lot of null values, I can see repeated values, and I can see everything is been dumped into the same table. Okay, so यहाँ पर issue क्या है ना, दो it is in a table format. Okay, ये समझो एक टेबल फॉर्मेट में है, बट हर चीज एक ही चीज में डंप करी है, जरूरत नहीं है. अब यहाँ पर कस्टमर नेम नहीं है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम क्यों है? ठीक है. या तो सब चीजें होनी चाहिए, या तो सीक्वेंस में होना चाहिए, बराबर से होना चाहिए. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ नल वैल्यूज बिकॉज ऑफ दैट. ओके. प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट कॉलम में भी नल वैल्यूज हैं. फिर आई कैन सी डेटा में भी नल वैल्यूज हैं. ठीक है. दिस डजंट लुक अ वेरी गुड डेटा टू अस. ओके. व्हेन यू वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, वी नीड डेटा आल्सो इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट. ओके. जहां पर अगर नल वैल्यूज ज्यादा नहीं है, तो रिपीटेड वैल्यू ज्यादा नहीं है, तो
तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए रिपोर्ट एनालाइज करने के लिए। ठीक है, इट गो हैंड इन हैंड। इफ यू हैव वेरी गुड डेटा यू विल बी एबल टू मेक गुड रिपोर्ट्स आउट ऑफ इट। वेरी सिंपल, क्लियर गाइस? ठीक है, अभी इसी एक टेबल को अगर मैं डिवाइड कर दूं तीन अलग अलग टेबल में, फॉर इंस्टेंस इफ आई जस्ट शो यू, सी फॉर इंस्टेंस आई हैव अ कस्टमर टेबल, this is one customer table, okay, wherein I have information such as, so मेरे पास तीन कस्टमर्स हैं। तो जब भी आप साइन अप करते हो, फॉर इंस्टेंस इफ आई हैपन टू साइन अप इन Amazon, Flipkart or any of the e-commerce website, first I have to fill my details। तो उनके डेटाबेस में मेरी एंट्री हो जाती है कि भाई ये बंदा हमारे साथ कस्टमर है बेसिकली। ठीक है, सो अब यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर वाले डेटाबेस में क्या हो रहा था ना, somebody who is just ordering as a guest, तो उसने ऑर्डर किया है माउस एंड कीबोर्ड एंड उसकी वैल्यूज नहीं है। तो बट ये सब चीज एक चीज में डंप नहीं होनी चाहिए ना, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर फॉर्मेट टू दैट। अब यहां पर instead of creating everything into the same table, we have divided this table into three different tables, okay, in a structured format. If you just see, this is a customer table which will have only information of the customer, and if you just see, there are no repeated values, okay, and you can see customer location, phone number, okay, and customer ID. Then we have product table, okay, and we can also give a product ID to this particular, ठीक है। सो कर अंडरस्टैंड, दिस इज प्रोडक्ट 1 2, ठीक है, नहीं इसको देता हूं, ठीक है। सो ये मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है विच विल बी स्पेसिफिकली द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव इन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक है, जो मेरे पास प्रोडक्ट है इन दैट कंपनी और वेबसाइट और वट एवर इट इज, सो आई विल हैव ओनली इंफॉर्मेशन which is product related, okay, and it will not have any null values or duplicate values. See the product ID for iPhone is 101, okay, smartphone is 102, joystick, mouse, keyboard, and these are the respective prices. Clear guys? And I have what I have done, that I have created two tables, customer table and what do you say as customer table and product table. Next we have a transactional table, okay. So if you just see the transactional table, ये basically the amount of transaction that I have done. So if you just see the customer one, what is customer one guys? Customer ID one, customer ID one कौन है guys? If I want to name that particular person, iPhone. no, customer ID, Sorry. customer ID one कौन है? कस्टमर आईडी देखो, कस्टमर आईडी यासिर को वन मिला है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यासिर ने आईफोन खरीदा है एंड क्वांटिटी 1 है, और उसकी जो प्राइस है, अगर वो प्राइस भी डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर एमआरपी, ठीक है, ठीक है। सो देन अगेन हु इज कस्टमर आईडी 1, किसका है कस्टमर आईडी 1? यासिर. अगेन यासिर। कस्टमर आईडी 2 किसका है? प्रतीक. प्रतीक, ठीक है, उसने माउस खरीदा है। एंड थर्ड इफ यू जस्ट सी के कस्टमर आईडी 3 किसका है? आकाश, उसने खरीदा है कीबोर्ड, ठीक है। सी हम लोग प्रोडक्ट के बदले उसका प्रोडक्ट आईडी भी डाल सकते हैं यहाँ पर। सो अगर आईफोन खरीदना है तो मैं क्या प्रोडक्ट डालूंगा यहाँ पर? यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी क्या आएगा फिर? 101, करेक्ट, एम आई राइट गाइस? सी ऊपर देखो आप लोग, यहाँ पर स्मार्टफोन का है 102, 102, ठीक है। माउस का है, माउस का क्या है? 104, 104, गायब क्यों गए? ठीक है। एंड कीबोर्ड का क्या है गाइस? कीबोर्ड का है इट इज 105, ठीक है। सो डोंट यू थिंक आवर लाइफ हैज बिकम इजी? Instead of taking their entire name
I can put their product ID. ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है, बट दिस इज अ ट्रांजैक्शनल टेबल गाइस. सो वन पर्सन कैन बाय मल्टीपल थिंग्स, एम आई राइट गाइस? सो उनके आईडीज भी रिपीट होंगे फॉर श्योर, बट उनके नाम रिपीट नहीं हो रहे. इंस्टेड ऑफ पुटिंग एंटायर, या सर आई एम जस्ट पुटिंग 1 1 2 2, आई एम जस्ट गिविंग अ कोड. तो जो इतनी सारी स्पेस है वो ऑक्यूपाई नहीं हो रही है, एंड आई एम जस्ट रिप्लेसिंग देम विद देयर आईडीज. So this is a transactional table which will have multiple values, repeated values, and it will have all the values जिसने प्रोडक्ट खरीदा है. गॉट इट? अब यहां पर इफ आई वांट टू सी कस्टमर आईडी इज यासिर एंड प्रोडक्ट आईडी 101 इज, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट आईडी? iPhone. Correct guys? And same goes with 102 is smartphone, 103 is joystick, 104 is mouse, and 105 is keyboard. Can you see some sort of relationship between tables? Correct? There is relationship between tables. It is a database. For instance, अब ये Amazon का database है, ठीक है, and the data is been stored in MySQL या SQL server, ठीक है. So you can see relationship between tables. That is why it is called as RDBMS, Relational Database Management System. Okay. So whenever we have relationship between tables, it is called as Relational Database Management System. This cannot be achieved in Excel. So that is why it is just called as DBMS. Okay. And it is stored in a structured format so that it becomes easy for you to interact with, the tables can interact with each other because of their common functionalities. For instance, यहाँ पर common column है ना, there has to be some sort of common column. अब यहाँ पर the column which is there, it is unique in nature. You don't see duplicate values. That is why it is called as dimension table. Okay, which will have product information, customer information, information, moreover text values. Whereas this will have sales value. सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जहां पर पूरी पूरी एंट्रीज की है कि किसने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा है डेली बेसिस पे, ठीक है. सो अ पर्सन कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ओके, एंड आई कैन जस्ट पुट देयर कस्टमर आईडीज, प्रोडक्ट आईडीज एंड द क्वांटिटी दे हैव बॉट. ओके, एंड दिस विल हैव रिपीटेड वैल्यूज, ठीक है, एंड मोर ओवर इट विल हैव सेल्स नंबर्स. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फैक्ट टेबल. ठीक है. सो अंडरस्टैंड गाइस, फ्यूचर में हम लोग और इसको समझेंगे. जस्ट करंटली अंडरस्टैंड दीज आर कॉल्ड एज डायमेंशन टेबल. डायमेंशन टेबल मोर ओवर हैव अ यूनिक कॉलम, ठीक है. यूनिक कॉलम को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं, एंड यहाँ पे इसको फॉरेन की बोलते हैं. दिस विल टेक वन मोर लेक्चर. बेसिकली जब आप मेन क्लास में आओगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, बट करंटली अंडरस्टैंड दिस थिंग. दिस इज अ डायमेंशन टेबल. अच्छा, प्रोडक्ट टेबल क्या होगा? इज इट अ डायमेंशन टेबल और अ फैक्ट टेबल? एनीबडी? So it's a fact table. कैसे फैक्ट टेबल हो गया? Sir, like here it's given the price, like it is sharing the fact that this is the product ID and the particular. Do you see duplicate values? Do you see duplicate values here, Sapna? Sir, no, sir. In this table, duplicate value is not there. Yes, duplicate values नहीं है. This is the product information, guys. Product Yeah. information है ये बस, ठीक है. So this will majorly a dimension table. यहाँ पर यूनिक है. अब यहाँ पर हम देखे जाएंगे क्वांटिटी में. यहाँ पे ना आप लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर एमआरपी डालना चाहिए था मुझे, ठीक है, और यहाँ पर सेल्स कॉलम, ठीक है. यूजुअली यही होगा, ठीक है. सो दीज आर द कॉलम्स दैट इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टेबल, and that is why it is called as a fact table. And these information wherein it will be a specific information about a customer, about a location, about a product, ठीक है. These informations are called as a dimension table, and these tables are called as a fact table. Clear, Sapna and everybody else? Sir, I have a doubt. हाँ बोलो ना. Sir, we are doing BI in the morning session. Mhm. So there we have learned, sir, about the merge query and this one custom tables, transform columns. In that, sir, I don't understand what is the difference when we are doing the things in that. There also we have the columns. We can change we can particularly make a different tables also. Okay. So I'm little bit confused here. Like when you are making the dimension different, we are definitely making in a one sheet in that.
we are merging that. So we have also separate columns where we have duplicating also, changing the values also. See, So depending upon the requirement, अगर whenever see ये terms और आगे आगे जब आप समझोगे ना, नॉर्मलाइजेशन डिनॉर्मलाइजेशन क्यों कर सकते हैं, अगर सी एक छोटा टेबल है और वहां पर आपको लगता है कि इतनी सारी वैल्यूज नहीं, उसको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक चीज में रखोगे, बट वो स्ट्रक्चर्ड वे में अगर मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं, सब चीज हम एक चीज में डंप करें, तब अच्छा नहीं होता है। रिक्वायरमेंट ऐसा है कि ऊपर वाला टेबल देखो, सब चीज एक ही टेबल में डंप की हुई थी, दिस इज नॉट लुकिंग अ वेरी गुड टेबल। इस सिनेरियो में हमने टेबल को डिवाइड किया। अब ये कब होता है, जब व्हेन वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। छोटा डेटा है, एक्सेल में काम कर लेंगे ना हम लोग, उसमें एक ही टेबल में काम कर लेंगे, इश्यू नहीं होगा। गॉट इट। जब जरूरत पड़ती है कि वी हैव मल्टीपल वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ टेबल एंड उसको स्टोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, so this is much more easier way, rather than writing the names again and again, we are just giving them IDs. Okay, and this information is specifically to a customer, this information is specifically to a product, this information is entirely a transactional table which will have all the values. So basically my question is, like in comparatively to the work in Excel and BI, like in this one, sorry sir, so in SQL, so SQL is more specific. If you want a very specific, Sapna, don't get confused, go one two at a time, you will get confused. Either do SQL first or Power BI first, don't get confused, mix mat karo dono ko ek din pe, go with the flow. okay, ठीक है, got go it. with the flow, आप कंफ्यूज करो इसको। सी अल्टीमेटली टेबल सब जगह रहते हैं, ठीक है। पावर बीआई इज अ विजुअलाइजेशन टूल, ठीक है। Yes, what is correct, SQL? What is it's a SQL? language, sir. It's It's a a language. language. And where do you use it? Where In do you Power use it? BI. No, you use it in a database. Database, sorry sir. हाँ. Database, ठीक है। So these are two different things. टेबल सब जगह सेम रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी इधर ज्वाइन। सी अगर रिक्वायरमेंट ऐसा रहा आपको ज्वाइन करना है, जो कि हम फ्यूचर लेक्चर में देखेंगे ज्वाइंट्स क्या होता है परफॉर्म करने के लिए, वो भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट जो आइडियल सिचुएशन होती है जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर रहता है इन लॉट ऑफ द व्हाट यू से, जैसे ई कॉमर्स का एक डेटाबेस है, किसका, Amazon का, फ्लिपकार्ट का, तो मेजरली इट विल हैव कस्टमर टेबल, इट विल हैव प्रोडक्ट टेबल एंड ट्रांजैक्शनल टेबल। अभी आपने जो देखा है पावर बीआई में एक सिंगल टेबल देखा है, जहां पर वहां पर वैल्यूज कम है ना, 4 कॉलम 5-6 कॉलम है, उसके लिए आप 2 टेबल थोड़ी बनाओगे, 3 टेबल नहीं बनाओगे। गॉट इट, दैट इज द रिक्वायरमेंट, सो अंडरस्टैंड दैट थिंग, मिक्स मत करो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सपना, 1-2 एट अ टाइम। फिर जब आप दोनों को, जब आप डेटाबेस से, डेटाबेस मतलब सीक्वल सर्वर माई एसक्यूएल से डेटाबेस पावर बीआई में लेके आओगे, जब समझेगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। गॉट इट? Okay, yes sir. यस, ठीक है। गाइस, एनी डाउट सो फार? व्हाट इज अ डेटाबेस and what are the benefits of SQL? Any doubts, guys? Is it clear? Sai, Monish, Shubham, Yes, sir. Kishan, Tejas, Yes, sir. clear, no? बहुत लोग Yes, के लिए sir. तो Yes, एक्चुअली पता है हम लोग को ऑलरेडी, बट ठीक है, बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है गाइस, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, यू कैन सी विच स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन देख सकते हो आप लोग अभी? Sir, we have not seen any screen now. ओके, लेट मी जस्ट शेयर इट। it's not visible. या, ठीक है। गाइस, आई विल बी शेयरिंग व्हाट यू से अ वीडियो टू डाउनलोड SQL सर्वर एज वेल एज SSMS। जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव डेटाबेसेस, जैसे SQL सर्वर है, उसके साथ एक एनवायरनमेंट लगता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। सो आई विल सेंड यू अ वीडियो टुडे इटसेल्फ वेयर यू हैव टू डाउनलोड सर्वर, ठीक है, जो डेटाबेस है अपना, एंड उसके साथ में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी फॉर SQL सर्वर, इट इज SSMS, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ओके, wherein it works parallelly with that database,
so that whenever you want to interact with the database, you use that particular application called as SSMS. Okay. By end of this lecture, I will be sharing a video when make sure that you for the tomorrow session you download that SQL Server, and you can practice also along with me, or else you can I will give you an homework tomorrow to practice it. Okay. Now let me just share my SQL Server ka screen. Okay. Can you see my screen, guys? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Okay. So this is basically SQL Server. SQL Server का SSMS. So I have a SQL Server, ठीक है, wherein I have done a connection with my SSMS. Okay. SSMS is an application wherein you can interact with the databases. Okay. This is the UI for SSMS, wherein if you just see databases के अंदर क्या आता है? Tables आते हैं. ठीक है. So these are databases that I have currently in my SQL Server, and these are the databases that I have. Okay. So these are databases. If I want to see some tables, so if you just see under this particular database called as Analytics Academy, I have tables such as customer table, production table, transactional table. Okay. Correct. Correct. Am I right, guys? So whenever you have a database, you have a for instance I have SQL Server database, I need to create. अगर मुझे database already है मेरे पास तो ठीक है, but अगर मुझे create करना है, for instance I want to create a database called as Analytics Academy, जो कि मैंने already create करा है. I want to show you how to create a database into my server. So I will create database name. ठीक है. Analytics Academy. ठीक है. अब इसको क्रिएट करता हूं. सो आई एम क्रिएटिंग अ डेटाबेस, सो आई विल जस्ट क्रिएट syntax. So this is the way you will create command completed successfully. ठीक है. अभी कैन यू सी दिस डेटाबेस इन दिस पर्टिकुलर थिंग? नो ना, क्योंकि मैंने अभी क्रिएट किया. इसको रिफ्रेश करूंगा मैं. कैन यू सी दिस particular database has been created in my SSMS. Okay. अब database is comprises of tables. Am I right, guys? Correct. अभी database Yes, है sir. तो tables भी होंगे. तो अगर मुझे tables create करना है ना, ठीक है, so I will create table. ठीक है. किसको पता है syntax, guys? Anybody can want to help me? Create table. Hello. Analytics. नहीं, टेबल क्रिएट करना है तो क्या करूंगा मैं उसके लिए? एनीबडी? Table name. टेबल नेम. ठीक है. सो पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया, डेटाबेस का नाम दिया. अब मैं कर रहा हूँ एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ. सो आई एम क्रिएटिंग स्टूडेंट टेबल, टीबी. ठीक है. टेबल कॉम्प्राइजेस ऑफ कॉलम्स. ठीक है. मैंने एक टेबल बनाया है, उसमें मेरे पास कॉलम्स होंगे. सो कॉलम दैट आई हैव इन दिस पर्टिकुलर टेबल इज स्टूडेंट आईडी. ठीक है. ठीक है. स्टूडेंट आईडी एक कॉलम मैंने जनरेट किया है. ठीक है. सो उसका एक डेटा टाइप देना पड़ेगा, या तो वो टेक्स्ट डेटा टाइप है या तो वो इंटीजर डेटा टाइप है. आई हैव टू स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम. सो कस्टमर आईडी इज बेसिकली अ इंटीजर ना, इंटीजर जैसा हुआ ना. सो आई विल पुट INT. सो आई एम असाइनिंग अ डेटा टाइप टू दिस पर्टिकुलर column as integer. Next I have column called as student name. ठीक है. दिस इज अ टेक्स्ट कॉलम. Character. ठीक है. टेक्स्ट Yeah. कॉलम. सो उसके लिए डेटा टाइप अवेलेबल है SQL में, वो है कैर और वेरकैर. ठीक है. सो आई एम जस्ट पुटिंग अ वेरकैर. ठीक है. एंड मैक्सिमम जो नंबर ऑफ स्पेस वो ले सकता है अ नेम कैन बी 30 के ऊपर लेगा नहीं. सो आई एम जस्ट पुटिंग अ नंबर एज 30 कि भाई मैंने जो एक कॉलम क्रिएट किया है स्टूडेंट नेम,
उसका वेरिएबल कैरेक्टर हो सकता है 30 मैक्स टू मैक्स. नेक्स्ट कॉलम दैट आई विल क्रिएट इन दिस पर्टिकुलर इज स्टूडेंट एज कर सकता हूं, करेक्ट, जो कि क्या होगा गाइस, इट विल बी अ इंटीजर कॉलम और टेक्स्ट कॉलम. क्या हो सकता है गाइस वो? इंटीजर कॉलम होगा. इंटीजर. इंटीजर करेक्ट, ठीक है. सो हमारे पास डेटा टाइप इंटीजर भी होता है या बिग इंट हो सकता है. मतलब बड़ा इंटीजर है तो बिग इंट लेंगे, छोटा इंटीजर है तो हम छोट इंट लेंगे. we have tiny it also, we will see in future data types. ठीक है. देन उसके बाद स्टूडेंट फोन नंबर. ठीक है, ये क्या होगा गाइस? इंटीजर होगा ये भी. बिग इंट होगा क्योंकि 10 नंबर का होता है ना. ठीक है. देन वी हैव ईमेल. ईमेल क्या होगा? सर वारकर ही होगा, वेरिएबल होगा. न्यूमरिक अल्फाबेटिक न्यूमरिक. यस यस, ठीक है. सो मैं लेता हूँ 50 मैक्सिमम. 50 के ऊपर तो किसका होगा नहीं ना. ठीक है. ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन. ठीक है. सी, मैंने पहले क्रिएट किया डेटाबेस. और डेटाबेस क्या होते हैं? डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग ने अगर हमने हमारा जो डेटाबेस था अमेजोन का था या फ्लिपकार्ट का था, तो वहां पर कस्टमर टेबल हो गया, वहां पर प्रोडक्ट टेबल हो गया. यहाँ पर अपने पास क्या होगा? मेरे पास क्या होगा? मेरे पास होगा स्टूडेंट टेबल होगा. ठीक है. स्टूडेंट्स ने कौन से जो कोर्स ज्वाइन करे वो टेबल होगा, जो कोर्सेज का टेबल होगा बेसिकली. एंड किस किस ने ट्रांजैक्शनल टेबल, किस किस ने कौन से साइन अप किया है कोर्स के लिए, उसका टेबल होगा, ट्रांजैक्शनल टेबल. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डेटाबेसेस which will have different tables. Correct guys? So this will table currently will have first table called as student table. ठीक है. Can you see command completed successfully? ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस अगर मुझे देखना है जो मैंने टेबल क्रिएट किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है, ठीक है, वो मुझे देखना है ना. सो उसके लिए मुझे एक सिलेक्ट क्वेरी लगती है. फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू सी द कॉलम्स दैट आर देयर इन माय पर्टिकुलर टेबल, सो आई विल पुट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टीबी. ठीक है. सो इफ यू जस्ट सी, can you see this? I have created 1, 2, 3, 4, 5. 5 columns are being created into my database. And if you just see the sequence, it is student ID first, then the name, then the age, then the student phone number, then the email. And it is automatically being given in the same sequence. And you have to follow the sequence also when you insert values into the tables. Okay, guys, clear? So currently I have created a database, then I have created a table wherein I have created the columns. A table will first comprise of the columns. ठीक है. उसके बाद आप लोग इंडिविजुअल वैल्यूज हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं उसके अंदर. करेक्ट. अब हमारे पास टेबल आ गया, अब हमको करनी है वैल्यूज इंसर्ट उसके अंदर. करेक्ट. सो हाउ डू यू इंसर्ट वैल्यूज? उसका कमांड होता है इंसर्ट. ठीक है. इंसर्ट इनटू, आपको किसमें करना है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल. ठीक है. उसके बाद अभी आपको करनी है वैल्यूज. ठीक है. वैल्यूज. तो फर्स्ट कॉलम कौन सा था हमारा? स्टूडेंट आईडी. इट इज एन इंटीजर. करेक्ट. तो मैं दे दूंगा 1 कॉमा. सेकेंड कॉलम कौन सा था हमारा? स्टूडेंट नेम. ठीक है. सी अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टूडेंट नेम इज द टेक्स्ट डेटा टाइप, तो उसको हमेशा हम लोग ने ना इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू डालनी है, वरना उसको वो टेक्स्ट कंसिडर नहीं करेगा. दिस इज अ रूल दैट हैज बीन सेट अप बाय द एसक्यूएल. तो करंटली द स्टूडेंट नेम इज यासर. तो अगर वो टेक्स्ट डेटा टाइप है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में अपन को एंट्री करनी पड़ेगी यहां पर. ठीक है. देन थर्ड वी हैव स्टूडेंट एज. सो लेट मी जस्ट पुट एस स्टूडेंट एज एज 22. ठीक है. देन आई हैव फोन नंबर. फोन नंबर क्या है? बिगिट 98122. ठीक है. ये डाल दिया मैंने. देन वी हैव ईमेल आईडी. यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस गाइस. गाइस जो इफ somebody is not speaking, no, select capital letters. ठीक है. नाउ वी हैव ईमेल. ठीक है. ईमेल कैन बी yes@gmail.com. ठीक है. अच्छा ये where क्या है तो इसको भी मुझे इन्वर्टेड कॉमास में डालना पड़ेगा.
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, टू एंड दिस पर्टिकुलर क्वेरी। अगर मुझे एग्जीक्यूट करनी पड़ी है ना, तो मुझे यहाँ पर सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर क्वेरी। सो आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, अगर मुझे देखना है, इफ आई वांट टू सी व्हाट आई हैव एडेड इनटू माय टेबल, आई विल गो सेलेक्ट एंड execute it. Can you see my first row is been executed and I can see it in my tables? Correct, guys? Yes, sir. Okay, so yes, select capital letters. Yes, Kishan. So this is how you insert values into your tables. Correct? Am I right, guys? अभी समझ लो, मेरे पास एक की इंफॉर्मेशन, फॉर इंस्टेंस एज इंफॉर्मेशन इज नॉट बीन गिवन बाय अ स्टूडेंट for whatsoever reason. So how do you put values accordingly? So I will put insert into student table. ये मैं second value put कर रहा हूँ, values, ठीक है. Then I will put as Sapna. Sapna doesn't want to give her age, so that is why. So in this scenario, I will put as null. ठीक है, and her number is, ठीक है, her email ID is sap@gmail.com. Can you see one row got affected? Correct? अभी गाइस ये तो हो गया सीक्वेंस में डाल रहा हूं. इफ आई डोंट हैपन टू पुट द वैल्यूज इनटू सीक्वेंस, देखते हैं क्या होता है. सी, इट्स अ लैंग्वेज एंड देयर आर सम रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर फॉलोइंग अ लैंग्वेज. ओके, सो फर्स्ट जो कॉलम जो है मेरे टेबल्स में इज, फर्स्ट कॉलम इज स्टूडेंट आईडी. Student अब ID. अब इसके बदले पहले मैं नेम ले लूंगा तो कैसे चलेगा. अब फॉर इंस्टेंस आकाश दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, आकाश दे दिया, एंड देन मैं देता हूं उसके बाद उसका आईडी देता हूँ 3. उसके बाद एक वैल्यू नहीं दिया उसने, तो वो दे देता हूँ, ठीक है. देन नंबर है, ठीक है. देन ठीक है, एंड दिस इज अ व्हाट यू से टेक्स्ट कॉलम, सो आई हैव टू पुट इट इनटू इनवर्टेड कॉमास. ठीक है, अभी इफ यू जस्ट सी यहाँ पर स्टूडेंट टेबल, ठीक है, conversation failed when converting the varchar value Akash to data type integer. See, I was following a sequence wherein the first column was integer, बट मैंने यहाँ पे आकाश दे दिया है, तो बोला डेटाबेस बोल रहा है कि भाई पहला जो कॉलम है आपका वो है इंटीजर, तो आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते हो. ठीक है, सेकंड कॉलम क्या है मेरा, varchar, उसके बदले आप इंटीजर डाल नहीं सकते हो. नल तो डाल सकते हो क्योंकि आपको कोई वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस अकॉर्डिंगली इफ यू आर इंसर्टिंग वैल्यूज इनटू द टेबल. And if you don't want to follow the sequence, you have to mention the sequence that you want to follow, which we will see in near future. Currently, just understand the functionality of a database, functionality of a table. How do you insert values into the table? Correct? Any doubt so far? How do you insert values into a database, guys? Correct? ठीक है, सो गाइस ये सब कमांड्स है हमारे पास एसक्यूएल में, एंड दीज आर कॉल्ड एज डीडीएल कमांड्स, wherein whenever you give a definition, a structure to a database, a table, it is called as DDL languages. ओके, डीडीएल कमांड्स बेसिकली जब भी हम क्रिएट करेंगे, इट इज अ whenever you're giving a structure to that particular table, okay, it is called as DDL command. अब इसमें से DDL command कौन सा हो गया गाइस,
कैन एवरी टेल मी? सेलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट। नहीं 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 नहीं, सेलेक्ट तो है ही नहीं। हमने एक स्ट्रक्चर दिया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो कौन सा कमांड आएगा डीडीएल में? क्रिएट सॉरी, क्रिएट। Yes. So create is a command wherein you are giving a structure, a definition दे रहे हो आप उस टेबल को। So DDL में आता है create command, करेक्ट। एंड आपके पास एक ऑलरेडी टेबल मौजूद है, उसमें आप कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो। जो ऑलरेडी टेबल स्ट्रक्चर मिल चुका है उस पर आप वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। उस पर्टिकुलर कमांड को हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अभी तक हमने ऐसा क्या किया है जहां पर हमने कुछ वैल्यूज इंसर्ट करी हैं? ऐसा कौन सा कमांड यूज किया है हमने? इंसर्ट। कैन यू सी इंसर्ट? इंसर्ट से हम लोग ने डेटा को मैनिपुलेट करा है, मतलब जो टेबल्स थे उसको हम लोग ने कुछ अपडेट करा है। सॉरी, इंसर्ट, ठीक है। एंड सो दिस इज कॉल्ड एज डेटा definition language, and this is called as data manipulation language, ठीक है। अभी गाइस ये जो मैं डैश डैश करके दे रहा हूं, दिस इज बेसिकली कमेंटिंग। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, कुछ भी एग्जीक्यूट होता नहीं है, मतलब दिस इज जस्ट अ कमेंटिंग। इस पर्टिकुलर डैश डैश से है ना, इस मतलब मुझे कमेंट करना है बेसिकली। सो दिस इज जस्ट फॉर कमेंटिंग एंड इट इज, यू कैन सी द कलर आल्सो इज ग्रीन। Got it? So create is a DDL command. Basically, you have created a database. You have given a structure. Under database, we have tables. Tables को भी आपने create किया, and you have given columns to that particular table. Okay, a structure. So whenever you are giving a structure, कुछ नया बना रहे हो ना, वो आते हैं commands in DDL, which is called as data definition language. And then we have data manipulation language. जो आपका टेबल है उसमें आप इंसर्ट, अपडेट, कुछ ऐसे फॉर्मेलिटीज कर रहे हो, it comes into data manipulation language. Today we saw insert into data manipulation, and in for create we saw, for data definition we saw create, and for data manipulation we saw insert. And whenever you want to see what is there in your data, आपने डेटा इंसर्ट किया है, अपडेट किया है, क्रिएट किया है, ठीक है, वो आपको डेटा देखना है, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम बोलते हैं डेटा डीक्यूएल, विच इज डेटा, सर यस, क्वेरी लैंग्वेज। सर डीएमएल में तो सेलेक्ट भी आता है ना? किसमें? डीएमएल में डीएमएल में एनकेस पहले किशन, डीएमएल में पहले सेलेक्ट आता था, बट नाउ इट इज बीन कैटेगराइज्ड इनटू डीक्यूएल किशन। earlier it was definitely in DML, but currently whenever you want to see data, okay, it comes into DQL, which is data query language. It comes into select. Actually Kishan is right, पहले select query भी DML में आता था, but उसके लिए एक नया कमांड बन गया है, which is called as data query language, and it comes into DQL. So select comes into DQL now. Kishan, is it clear now? Yes, sir. Okay guys, any doubt so far? Those who are attending SQL for the first time, see, understand one thing guys, it is easy. Okay, you have to, if you know decent English now, you will be able to write these commands. Okay, so whenever you want to create a database, अभी देखो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट किया है हमने, ठीक है, ये डेटाबेसेस हैं बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अगर whenever we create a table or data, it comes into data definition language. Whenever we want to insert, update, इसमें कुछ अपडेट करते हैं वैल्यूज, उसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड whenever we want to see, फॉर इंस्टेंस अभी यहाँ पर देखना है सेलेक्ट स्टार, स्टार, वापस से देखता हूँ, वापस से बताता हूँ आपको। सेलेक्ट स्टार, इस पर्टिकुलर टेबल में मुझे सब देखना है, तो आई विल एबल टू सी सेलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स एवरीथिंग,
everything, all the columns that are there in that particular table. No, I want to see which star. So star means everything from the table. So star symbolizes that you want to see all the columns which are present in your table. So that is why select star from student table. Okay, which we will see, which you after executing this particular query, you will see all the columns and all the values into your particular table. Correct? Am I right, guys? ठीक है, अभी है ना, यहाँ पर है ना, सपना नाउ हैज गिवन मी द एज, मुझे सपना ने एज भी दे दी है. सो आई वांट टू अपडेट दिस पर्टिकुलर रो with the age of Sapna which she has given earlier, which she has not given. So in that scenario, what we will do? We will do update. ठीक है, अपडेट किसको करना है? We want to update the student table. ठीक है, update the student table. Set student age is equal to 25. ठीक है, अब मुझे आई एम स्पेसिफाइंग द एज टू बी 25, बट आई हैव टू ऑल्सो स्पेसिफाई कि विच रो में मुझे एज सेट करनी है 25. सो आई विल पुट वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू क्या होगा गाइस? 2. बराबर ना गाइस? अब यहां पर इफ आई जस्ट सी अपडेट स्टेटमेंट में, can you see one row got affected? If I now see the updated table, can you see guys, the data is been updated. अच्छा मुझे बताना गाइस, अपडेट किस में आएगा, DDL क्या DML में? एनीबडी? DML. वेरी नाइस. सो अपडेट आएगा DML में. ठीक है, बिकॉज जो डेटा ऑलरेडी मौजूद है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, उसको हम लोग ने एक और एक वैल्यू से अपडेट किया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ DML कमांड. करेक्ट? एम आई राइट गाइस? ठीक है, अभी क्या हो गया ना गाइस, मेरे से गलती हो गई एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल. ओके, I want to delete this table, entire table. So in that scenario, I will use drop table. ठीक है, टेबल नेम. yes, table name क्या है? स्टूडेंट. ठीक है, ठीक है. So if I am now executing this particular statement, कैन यू सी इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मतलब ऐसा कोई टेबल मौजूद ही नहीं है मेरे पास. ऑब्जेक्ट मैंने देखा था ना, ऑब्जेक्ट और टेबल विच मीन्स द सेम. सो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम मीन्स टेबल नेम स्टूडेंट टीबी. सो वो मैंने ड्रॉप कर दिया तो मुझे दिख नहीं रहा. ठीक है, अच्छा मुझे बताना, ड्रॉप कम्स इनटू DDL और DML? DDL. वेरी नाइस. ठीक है, बिकॉज यू आर प्लेइंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, आपने पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर दिया. दैट इज व्हाई इट कम्स इनटू DDL कमांड. करेक्ट? बट गाइस इन रियल लाइफ ना आपको ड्रॉप का एक्सेस नहीं मिलता है. सी करंटली मेरे पास सिर्फ 2 रोज थी, आपने ड्रॉप कर दिया. जस्ट इमेजिन अगर आपने ये ब्लंडर अपने ऑर्गेनाइजेशन में किया, आपको जब भी निकाल देंगे. सो आपको बहुत चीज का एक्सेस भी नहीं होता है. So drop is a very crucial statement. You can't just use a drop and drop a table like that. Currently, I wanted to show what is a drop command, and that is why I was showing it. So again, if I want to create the table, what I will do, guys? I will create this particular syntax again. Correct? Am I right, guys? Create table. Correct? Okay. If I again see, I will be again able to see the columns. Then I will again insert this particular row. ठीक है, मैं ये दोनों रो साथ में भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ गाइस. कैन यू सी? फेल व्हाइल कन्वर्टिंग, हाँ क्योंकि ये गलत था ना. ठीक है, नाउ
इफ आई अगेन सी, कैन यू सी दिस? ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा हूं सपना। करेक्ट? क्लियर गाइस? एनी डाउट्स? अभी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है ना, सपना की एंट्री 2 बार हो गई है। करेक्ट? आई वॉन्ट टू डिलीट अ रो, मुझे डिलीट करना है एक रो को, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है? डिलीट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टीवी। ठीक है, कहां पर करना है मुझे गाइस? कहां करना है? थर्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने बी के बदले टी लिखा है, इसीलिए रेड मार्क दे रहा है ना, को बोलने का ना आप लोग मुझे ये गलत कर रहा हूं मैं। वेर, अच्छा मुझे बताना गाइस, अगर मैंने सपना लिया या 2 लिया या 3 लिया, आईडी लिया, दोनों डिलीट होगा या एक डिलीट होगा? सर अगर तो बहुत आईडी सपना के लेंगे तो वो दोनों डिलीट हो जाएंगे ना। यस, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट। स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2, 2 रो वॉज अफेक्टेड, क्योंकि मैंने ऐसी रो डिलीट कर दी थी, बाद में वापस जाके मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ जाएगा, इंसर्ट एक ही बार करना पड़ेगा। करेक्ट? rather than dropping all the things, I can at least drop similar rows and insert a row which is single in nature, मतलब एक ही बार मैं इंसर्ट करूंगा। मैंने 2 बार इंसर्ट करा था, इसके लिए 2 बार एंट्री हो गई थी। इफ आई नाउ अगेन सी द स्टूडेंट का टेबल, कैन यू सी? करेक्ट? अब अगर इसमें मुझे अपडेट करना है, आई विल डू अपडेट एंड इफ आई अगेन सी द स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट? अच्छा मुझे बताना डिलीट किस में आएगा? डीएमएल, आई यू श्योर? किशन आई यू श्योर? सोच के बताओ। तो सबने मैनिपुलेट किया है ना। यस यस यस, इज एवरीबडी अग्री विद किशन और नॉट? यस, ही इज एक्चुअली राइट, वी आर एक्चुअली डिलीटिंग अ रो। हम लोग कोई डेटा या स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिलीटिंग अ सिंगल रो। गॉट इट? So today we saw few DDL, DML and DQL commands. Okay, जहां पर DML, DDL में we saw create and drop, DML में we saw insert, update and delete. Okay guys, ठीक है। अभी अपडेट और डिलीट में यू गाइस कैन सी मैंने ना वेर क्लॉज यूज किया है, मैंने ना वेर क्लॉज यूज किया है। ठीक है, अगर मैं वेर क्लॉज नहीं यूज करूंगा ना, तो देखना क्या चेंज होगा। फॉर इंस्टेंस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड मैं यहां तक ही एग्जीक्यूट करता हूं। कैन यू सी 2 रोज गॉट अफेक्टेड? सी एज में उसने सबको 25 कर दिया, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से रो में जाके मुझे स्टूडेंट एज 25 करना है। सो अपडेट स्टेटमेंट इज वेरी रिस्की when you don't use a where clause. So where clause is very important whenever you want to update a single cell. If you don't happen to do that, the entire column of student age will be replicated by the value that you have set. Same goes with, अब यहां पर अगर मुझे करना है स्टूडेंट एज और यासिर की एज एक्चुअली गलत आ गए, तो मैं यहां पर करूंगा स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1 एंड उसकी एज में सेट करूंगा 22। स्टूडेंट
ठीक है. So now if you guys can see, I have done an update, and if I don't happen to use a where clause, all the values in that particular column will change accordingly. Same goes with delete. मैंने delete mention किया है कि जहां पर student ID 2 है ना, उसको delete कर. अगर मैं इसको हटा देता हूं ना, and just delete from table student table, अगर मैं ये execute करता हूं ना, कैन यू सी 2 rows got deleted. यहां पर भी मैं डिलीट कर रहा हूं, कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं ना. सो कैन यू सी all the values in the tables got deleted accordingly. So whenever you are using a update or delete, make sure that you use a where clause. Otherwise, if you don't happen to use and delete all the values, structure तो रहेगा for sure, because it is a DML command. It is just playing with the values. It is not playing with the structure of the table. So values delete हो जाएंगी, but table का structure रहेगा, which is the columns. Whereas update में भी same होगा. अगर आप update कर रहे हो and you're not mentioning the where clause कि कहां पर आपको update करना है, तो सब values update हो जाएंगी accordingly. So you have to be very mindful whenever you are using an update statement and delete statement. Make sure that you use a where clause as well. Okay? Clear so far, guys? हेलो. Yes, sir. मैं म्यूट पे था क्या? नहीं ना. नहीं सर. अच्छा अच्छा. ओके गाइस, एनी डाउट सो फार? अभी तक समझा सबको? इज इट क्लियर? सर आप Can प्लीज we थोड़ा export? सा, मुझे एक एक्स्ट्रा कुछ चीज पूछनी है. बोलिए ना प्रभुजोत, बोलिए. अगर आप बता सकते हैं कि ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय में क्या डिफरेंस होता है, मतलब अगर ऑर्डर बाय या ग्रुप बाय लगाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस, क्या है उसमें? ठीक है. ऑर्डर बाय का क्या होता है ना प्रभुजोत, ऑर्डर बाय इज फॉर योर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. मतलब whenever you're doing a ascending or descending on a column. For instance, आपके पास एक सैलरी कॉलम है, मुझे उसको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. मतलब आपको चाहिए कि जो मेरा टेबल है, सबसे ऊपर जो सबकी टॉप सैलरी है ना, वो आए, उसके बाद नीचे नीचे जाके आए. तो आप कमांड देते हो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग में मुझे दे. ओके. करेक्ट. ठीक है. जी जी. एंड ग्रुप बाय क्या होता है ना प्रभु, समझो. जैसे आप 5 स्टूडेंट्स हैं, आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. जी. आपने आपने स्कोर किया है. मैं आपको ना एक बस दिखाता हूँ. ये फ्यूचर टॉपिक्स हैं, वैसे आपको समझा देता हूं मैं. ओके. ठीक है. हाँ ठीक है. ये दिख रहा है आपको? अरे यार. ठीक है. अभी देखो, फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये नाम है, यासिर है और अनिकेत है. ठीक है. और यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं उसके ABCD एंड ABCD, एंड इतना इन लोग ने स्कोर किया है. करेक्ट. यस सर. ठीक है. ठीक है. अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इसको ग्रुप बाय करना है. ग्रुप बाय इज बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ कॉमन रोज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मतलब सम, मिन, मैक्स. ठीक है. अब मुझे है जी. ना, अब टेबल का रिक्वायरमेंट है कि भाई, अभी आप जब एक एग्जाम देके स्कोर करके आप किधर अप्लाई करते हो, योर इंडिविजुअल मार्क्स डजंट मैटर. so what is more important is your total marks. Correct. So मैं यासर का टोटल देखूंगा क्या हो जाएगा, which will be a combination of all the marks that you have scored. Correct. Am I right, Prabhjot? ओके. So it will be a group by. So मेरा टोटल मार्क्स ओके. कितना है? 400 out of 500 का. 400. और अनिकेत विल बी, अनिकेत विल बी a sum of. ठीक है. So basically you're grouping common rows on the basis of aggregation. ठीक है. Got it? Yeah. So this is जी. aggregation. और ऑर्डर बाय क्या होता है ना, ऑर्डर बाय इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. मैं चाहूंगा कि ये जो ऑर्डर है ना, सबसे पहले 100 आए, उसके बाद 90 आए, उसके बाद उसका छोटा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर, छोटे से बड़ा. ओके. ओके. गॉट इट. सो दैट इज ऑर्डर बाय एंड दिस इज ग्रुप बाय. जी. ओके. ओके. थैंक यू सर. मैं इसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज था कि मतलब ऑर्डर बाय ग्रुप बाय में क्या नहीं नहीं, डिफरेंस. अरे बहुत सिंपल है एक्चुअली. क्या होता है ना, हम लोग बहुत बेसिक से जाते हैं, तो ये
मैं जब था तो मुझे मालूम है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से जाता हूँ ताकि सबको अच्छे से बेसिक से समझ में आए। आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कौन सा भी क्वेश्चन पूछ लो, इंटरव्यू पूछेगा ना आपको, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। बट जी जी। प्रोवाइडेड दैट आपका बेस क्लियर होना चाहिए, विच वी ट्राई टू यस। क्लियर फ्रॉम स्क्रैच। हाँ सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम की आपकी 15 डेज की भी फ्री बूट कैंप मैंने लगाया था, हम्म तो उसके अकॉर्डिंग में काफी हेल्प मुझे मिली थी हेल्प प्रैक्टिस के लिए। हम्म तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी ज्वाइंट्स मैंने सीख ली हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बराबर। अभी मैं वेयर बाय, हैविंग बाय, इसमें अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो वो भी अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। वो भी क्लियर हो जाएगा, आप मेरा एक बार क्लास अटेंड करो, एंड अगर जी जी। पॉसिबली हो सकता है ना प्रभजोत, अभी जो मैंने स्टूडेंट्स को सिखाया था वो लोग प्रो हो गए हैं, मतलब एक बैच पावर बाई एसक्यूएल का हो चुका है, एंड करेंटली ओके। लोग मार्केट में भी जा चुके हैं, एक आध कुछ ऐसे ऑफर भी कुछ टाइम में आने वाला है। ठीक है। सो ठीक है। सी, मैं नहीं बोल रहा कि बहुत 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 ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं मेक श्योर करता हूँ कि बच्चों का मैं बेस क्लियर कर सकूँ। ठीक है। एंड जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं अभी, जो हैविंग है या वेयर क्लॉज है, उसका भी एक सिस्टमैटिक वे होता है समझाने का, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अभी जैसे ऑर्डर जी बाय जी। और आप ग्रुप बाय में आप कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे बताया है मैंने। सो यस सर। माई वे ऑफ टीचिंग इज लिटिल डिफरेंट, बिकॉज मैं स्क्रैच से कोशिश करता हूँ सिखाने के लिए, एंड मेक श्योर करता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बढ़ जाए ईच एंड एवरी बंदे की। सी, आप 1 घंटा दे रहे हो, मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, हम दोनों का फायदा होना चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट। है यस ना? सर भाई। है ना? मेरा तो वही है, मुझे पढ़ाना मजा आता है। इट्स नॉट अबाउट मनी और एनीथिंग एल्स। आई एंजॉय पीपल मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं, मेरा फायदा ये नहीं, आप होता है। तो पढ़ाते भी अच्छा हो। मैंने जब 15 डेज का बूट कैंप लगाया तो मैंने एसक्यूएल तब सीखना स्टार्ट ही किया था जस्ट। तो हम्म। आपके सिखाते सिखाते मतलब काफी बेसिक मेरा क्लियर हो गया था उस टाइम पे भी। ओके ओके, थैंक गुड टू हियर दैट। सो पॉसिबली आप, हो सकता है तो सेशन ज्वाइन करो, आपके ऊपर है, एंड यू कैन जस्ट श्योर गेट इन सर, नहीं टच विद मैंने द टीम। करना स्टार्ट आपकी तरफ से। मुझे 2 कॉल आ भी चुकी है आपकी टीम की तरफ से। तो हम्म। मैंने उनको बोला भी था कि मैं अभी नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट करूंगा। अभी ये मई के मंथ से मैंने स्टार्ट करना है आपके साथ काम। चलेगा चलेगा, एक बैच तो चालू हो रहा है वैसे भी, वीक, ये क्या बोलते हैं, मंडे से आई गेस, एंड 8 o'clock का है। पॉसिबली अगर हो ओके। सकता है तो ज्वाइन करो, देन नथिंग लाइक श्योर इट। सर, श्योर सर, मैं जरूर जरूर कोशिश करूंगा कि मंडे से ज्वाइन कर लूँ। यस यस, बहुत सारे लाइनअप है, और मेरा बैच बहुत लिमिटेड लोग का होता है प्रभजोत, तो मेक श्योर करो आप गेट इन टच विद द टीम एंड ज्वाइन इट अकॉर्डिंगली। श्योर ठीक सर, है। श्योर, जल्दी ही करूंगा फिर ज्वाइन में। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभजोत। वेलकम सर। Yes. Just to confirm, the recording sessions will be uploaded to our LMS. Yes, Prashant, as soon as you sign up with us, एक LMS है जहाँ पर recorded sessions रहते हैं उसमें। ठीक है। Yes, notes also will be provided to you and everything will be provided to you. Anybody has any doubt, guys? अभी तक जो है, tomorrow also guys I'll be available 10 to 12. Tomorrow will be the last session for the demo. उसके बाद you can guys can take a decision, and if you have any doubt, be silly, कोई भी silly doubt हो, आप क्लियर करने की कोशिश करो, है ना, ताकि आसान हो जाए आपके लिए डिसीजन लेना गाइस, नथिंग लाइक इट। ठीक है। सो assuming that nobody has a doubt, we'll conclude the session, and I had a great time interacting with you guys, and I'll see you guys tomorrow. Okay guys, bye. Bye, sir. Thank you. Bye.